Structure of flower we have studied already. Anther is the male part and pistil is the female part of the flower. So let's study in detail the reproduction process, pre-fertilization events. Male part of the plant is this anther. This anther is bilobed. It has two lobes. You can see the two lobes. Bilobed anther is attached with the filament. These two lobes actually they have four chambers in between. If you cut it like this, you will see the four thecas, or it is dithecous on one side. So the pollen grains are produced inside this pollen. There is sporogenous mass in the beginning, and when this is going to dehisce, means when the anther is going to break, sometimes when you touch the anther with your hands, the yellow mass comes on your hand. तो वो जो yellow mass है, that is pollens. So the pollens, they come through these line of dehiscence. They are germ pores, we'll see later. So the pollen is going to come out of the anther. So this is the line of dehiscence. So the let's study the detailed structure of this anther. The anther has, this is the anther. This anther has layers, some external layers. The outermost layer is called the epidermis. So you know the in plants outermost layer is epidermis. Below this there is a layer called endothecium. The endothelial cells, they are going to develop some kind of thickening material at maturity, and they help in dehiscence. जब dehiscence का time आता है, इसके endothelial thick, ये इसके अंदर कुछ ड्राइनेस सी हो जाती है, which helps in breaking of the anther. So then next you can see two three middle layers, and innermost layer is called the tapetum. This tapetum is the nutritive layer. This provides nutrition to the growing pollens. Pollens are going to develop from these mother cells, which are microspore mother cells. These microspore mother cells are diploid. They will undergo meiosis to produce, uh, later on they will undergo meiosis and produce the haploid spores. The haploid spores are formed in the form of tetrads. This is the mature anther. So this mature anther has pollen grains. These pollen grains are in the form of tetrads. Tetrads means four pollens are joined together. Three you can see here. The other one, the fourth one will be at the back. So these four tetrads in the form of these pollens will be released in the air. After this, they will detach. This one pollen grain will detach from here. So these pollen grains, now these pollen grains, these are the tetrads, and these pollen grains, the structure of the pollen grain we'll study in detail. Before that, you can see here there is germ pore. There is germ pore here. This germ pore is the place from where the pollen tube is going to come out. When the pollen is going to germinate, so the pollen tube will come out. So you can see furrows also. These are the furrows. These furrows are the unthickened areas in the thick exine. This is the exine of the pollen. Let's study the structure of pollen grain or the female gametophyte. Now this is the mature pollen at a two-celled stage. This is the two-celled stage. You can see there is a large cell. What are pollen grains? Pollen grains are male gametophytes, or the male gamete carrying. So they have developed from microspore mother cells. After meiosis, the tetrads were formed, and then they are formed. Now the nucleus divides into two. The larger, the two nuclei
are produced. There is a cytoplasm around this nucleus, and this nucleus is also having a cytoplasm. First it is attached, but later on it is detached and it is suspended inside this cytoplasm. So this nucleus is surrounded by a little cytoplasm, you can see, and this cell is called the generative cell. This generative cell is going to produce male gametes, two male gametes. In case of angiosperms, two male gametes will be produced. We'll study later during fertilization what happens to those two male gametes. So this is the generative nucleus and the cytoplasm together, it is the generative cell. And this larger one is the vegetative cell. It is the vegetative nucleus, and this whole cell is called the vegetative cell. This will help, this cell produces the pollen tube. When the pollen is going to germinate on the stigma, it will produce the pollen tube. This is the germ pore. This is the external wall of the pollen, which is very thick. It is called the exine. An inner layer which is made up of pectins and celluloses is called the intine. Exine is made up of a very resistant substance called sporopollenin. Sporopollenin, one mark question. Most of the examiner, they are very fond of asking this question. Sporopollenin is the resistant. It makes the uh, pollen resistant to various temperatures, acids, and so many adverse conditions of the atmosphere. So this exine is the decorative wall of the pollen. We'll see in the next slide. It's so beautiful. It has some unthickened areas, but it is very thick protective layer made up of sporopollen. Now the uh, pollen grains, you can see they are so beautiful structures of the pollen. Exine is so beautiful, and here you can see the furrows, and these are the furrows. So these are the points from where the pollen tube or germination of the pollen is taking place. Now the nowadays the pollen, since it is very nutritive, is being used as a food also. So this pollen is being eaten in some countries. Now we'll study the development of female gametophyte. So female gametophyte develops inside the pistil. This is the pistil. This portion is called the stigma, then style, and this is the ovary. Inside the ovary you will see the production of ovules. These ovules inside the ovary, this was the external structure. Inside there are ovules. So this is the ovule, structure of ovule, and inside the ovule is future seed. So inside the ovule, the female gametophyte is going to develop. The egg is going to develop. So let's study these two outer and inner integuments. Integument matlab, integument means uh, skin. These are the two outer layers of the ovule. They are called the skin of, they are the skin of the seed. You know, they will in future form the skin of the seed. The testa integument of the seed, you must have seen in gram seed, it is brownish in color. So and the inner is transparent and whitish in color. In pea you must have seen sometimes it, you can see the outer layer coming out in your vegetable. So uh, in your soup, this area is called the nucellus. This is the tissue is called the nucellus tissue. Okay, this end of the ovule is called the chalazal end. This is the chalazal pole. So and this end is called the micropyle. Micropyle is the you can you must observe today only, go and see in your kitchen. This micropyle is the pore at the top of a gram seed. You can see small pore. This is the point from where the pollen tube is going to enter. The pollen tube or the male gamete carrying tube
will enter through here to fertilize this egg. Now in the young anther, this nucellular tissue, this tissue this tissue has certain cells like this, and these cells, one of the cell will act as the mother cell. Okay, that mother cell is going to produce this embryo sac. These eight, you can see 8 nuclei and little at in the embryo sac. This whole is called the embryo sac. So these 8, how they are formed, let's study. Here you can see the single cell which is going to produce those 8 is called the megaspore mother cell. This megaspore mother cell is going to divide by meiosis. This is diploid. Okay, so this is going to divide and produce 4 megaspore tetrads, like microspore tetrads. These are also megaspore tetrads. But here, out of these 4, 3 are going to degenerate. A typical plant study is being studied here. Variations are always there. Biology is a science of exceptions. Kahin na kuch variations you will see, but this is a typical case. 3 will degenerate and 1 is functional. This functional megaspore is going to divide and redivide and to produce from one nucleus 8 nuclei are produced. Okay, 2 nuclei will come in the center. These are called the polar nuclei, and later on they will join to form a central cell. Okay, this here towards the micropylal end, the central one is called the egg, and 2 surroundings are called the synergids. So egg and synergids together form the egg apparatus. Egg apparatus. So this this is egg apparatus. These 2 polar nuclei, later on they will form a single cell. And these 3 are antipodals. Towards the chelizal end, these are the antipodals. So this whole is the embryo sac. Here you will see the egg or the female gamete. So this is the development of female gametophyte. You must have understood completely. Now the mature ovule. This is the picture from your book. So must have seen, this is a mature embryo sac. This is the anatropous ovule, a mature anatropous ovule. Here you can see a diagram drawn by some artist. This is the chelizal end, and this is not nucleus, this is nucellus tissue. I have already told you, nucellus. Okay, these are antipodals, embryo sac, and secondary nucleus. Here you can see at majority those polar nuclei, they have fused together to produce a secondary nucleus. Can you tell me what will be the ploidy level? It will be diploid, because 2 haploid they have nucleus have joined, so it has become diploid. We'll study later what happens to this secondary nucleus. Now here you can see the egg apparatus, the egg and the synergids. Okay, 2 integuments and then this micropyle. The point where this funicle is the stalk with which the ovule is attached on the placentae of the ovary. This point is called the hilum, where funicle is attached with the ovule. And this is a ovule which is inverted anatropous. Now I'll show you another ovule which is upright, which is orthotropous ovule, to just to compare, because I have seen so many times the structure of ovule is asked in the exam, 3 marks question. Draw the structure of an anatropous ovule. So that is the LS of an anatropous, longitudinal section of an anatropous ovule. This is orthotropous, just to compare. Always draw anatropous ovule. So this is all about the development of female and male gametophyte. So let's study the structure of anther, which is the male part of the flower. The anther has 2 lobes. These 2 lobes
bilobed anther it is. From outside they are seen as bi, but actually inside there are 4 lobes like this. Means the anther has 4 lobes like this. Okay, and in each lobe there are 2 thecus, 2 lobes inside each lobe. So this kind of anther is called dithecous anther. They are joined together by a connective tissue. 2-3 layers layers which are covering layers of the anther. Let's draw the anther here. This portion, only this portion will be magnified here. The outermost layer is called the epidermis. Let's draw the epidermis. I draw myself so that you can see the diagram, but you have to draw in the exam. So for a drawing purpose you must learn the drawing part also. So that is why मैं बनाती हूँ खुद. तो ये this layer below the epidermis is endothelial layer. Endothelium is going to help during the dehiscence of the anther. जब एंथर की डिहिसेंस होगी तब ये उसको काम आएगी. उसके बाद 2-3 लेयर्स हैं विच आर कॉल्ड मिडल लेयर्स. तो 2-3 लेयर्स आर बिलो दिस. सो ड्रॉ करके ये 2-3 लेयर्स मिडल लेयर्स. आउटर मोस्ट लेयर भी लेबल कर देते हैं एपिडर्मिस. ओके, इनरमोस्ट इज एक न्यूट्रिटिव लेयर है विच इज कॉल्ड द टेपीटम. ये जो 2-3 मिडल लेयर्स के नीचे जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है दैट इज द न्यूट्रिटिव लेयर. ये न्यूट्रिशन देने वाली है ग्रोइंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को. नाउ यहाँ पे यू विल सी इनसाइड जो हमने अभी बनाया वहाँ पे दैट इज द sporogenous mass in the young anther which will have this sporogenous mass which will have a diploid nucleus. These are diploid nuclei. These diploid nuclei containing cells, they are called the microspore mother cells. These are diploid. These microspore mother cells, they will divide by meiosis. They will divide by meiosis since they are diploid to produce tetrads like this. Tetrad microspores, each of these is going to become a pollen grain. Okay, the tetrad में 3 you can see here at the front, 1 will be at the back. So let's study the structure of pollen grain in detail. The pollen grain has the outermost layer. So first I will draw the tetrad only. So let's see, ये ऐसे बना देते हैं पूरा tetrad. Okay, now this tetrad will detach to produce one pollen grain. Now this pollen grain, structure of pollen grain, it has very thick outer layer which is called the exine. Exine, like this, draw like this, but at some points I have not drawn this exine.
These portions are called the germ pores. These are called the germ pores. From these points, the pollen tube is going to come out when this pollen is going to germinate. Okay, so inside, I'm drawing a section of the pollen grain from inside. This is called the intine. Before that, let's discuss about exine. Exine is a beautiful textured layer. It is made up of a substance called sporopollenin. Sporopollenin is the most resistant substance on this earth. जो pollen grains हैं वो दुनिया की सारी adverse conditions को face करते हैं, गर्मी, सर्दी, rainfall, acids. सो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्पोरोपोलिन उनको प्रोटेक्ट करती है. इट्स अ वेरी रेजिस्टेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस. सो एक नंबर का क्वेश्चन आता है स्पोरोपोलिन के ऊपर. देन देयर इज इंटाइन व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ओके, so this is made up of cellulose and pectin. Inside, this nucleus is going to divide and produce a smaller and a larger cell. The larger cell is called the vegetative cell and the smaller cell is called the generative cell. Generative cell. This generative cell is here. You can see I have made it attached to it. These are the vacuoles. But later on, this generative cell will detach and it will float like this. So must have seen some diagram. If you have seen this kind of diagram, so this generative cell and generative nucleus. This is the generative nucleus. So exine and some vacuoles. This is the final structure of the pollen grain when it is released in there at a two-celled stage. Okay, here this pollen grain, this generative nucleus, and is going to divide and produce two male gametes. When this pollen is germinating on the stigma, so it will become three-celled when there is pollen grain germinates. Okay, not in the beginning. So this is all about the development of male gametophyte. So clear. Now study the development of female gametophyte. Before we study the developmental stages, let's study the structure of an anatopous ovule. एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में. सो एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम तो एग्जाम में आता ही है, 3 मार्क्स का. आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स. सो उसको ड्रॉ करना आना चाहिए तुम्हें. तो उसको ड्रॉ करो. इसमें there are 2 layers, the outer layer and then there is an inner layer. These are covering layers. इसकी 2 covering layers होती हैं और ये covering layers बाद में सीड की कोट्स बन जाती हैं. सीड कोट्स यू नो चने का दाना देखो. आज ही जाके किचन में आप चने का दाना देखना तो तुम देखोगे कि जो चने का दाना है वो उस ऊपर से तो ब्राउन है और अंदर की तरफ से वो थोड़ा वाइट कलर का है. सो जो वाइट कलर की है वो इनर इंटेग्यूमेंट है. इंटेग्यूमेंट का मतलब स्किन है. ओके,
सो आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, 2 लेयर्स होती है। ये सारा टिश्यू जो अंदर है इट इज कॉल्ड द न्यूसेलस। इस न्यूसेलस टिश्यू में एक आधा सेल जो है वही मेगास्पोर मदर सेल बनने वाला है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर मैं इस वक्त मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बना रही हूँ। फाइनली क्या होने वाला है वो ये, इस मैच्योर एनाट्रोपस ओव्यूल में आप लोगों को अगर ड्रॉ करना आता है तो आप लोगों ने ये पूरा बनाना है ऐसा। ये इस एम्ब्रियो सैक में, दिस इज द एम्ब्रियो सैक में सेंटर में देयर आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। Here towards a nucleus, these are called the antipodals. ये जो एंड है इधर, this end is called the chalazal end, okay? और ये वाला एंड जो इस तरफ है this is called the micropyle। तुमने चने का दाना आज अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उसके ऊपर एक छेद नजर आएगा छोटा सा, दैट इज द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है जहां से पोलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, ओके? यहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ये सेंटर में इज एग, और इसके आसपास 2 सेल्स जो दिख रहे हैं आपको, दे आर कॉल्ड दी सिनर्जिड्स। तो एग और सिनर्जिड्स दोनों मिला के बनाते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस ये है फीमेल गैमीट, ओके? ये जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियाई हैं, ये बाद में मिलके एक न्यूक्लियस बना लेंगे विच इज कॉल्ड दी सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि उसका क्या रोल है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो कई बुक्स में अगर एक ही दिखाया हो, यहाँ सेंटर में एक सेल दिखाया हो, तो दैट विल बी डिप्लॉयड विच इज ए सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो अभी 2 पोलर न्यूक्लियस दिखाए, दोनों हैप्लॉयड। सो और ये जो जिसके साथ ये फ्यूनिकुलस, वो डंडी है जिसके साथ ये अटैच्ड होता है। तो ये फ्यूनिकुलस इज द portion with which it is attached to the funiculus। ये और ये हाइफी जहां से ये इसके साथ हाइलम, सॉरी, ये funiculus is attached to the ovule, उस पोर्शन को कहते हैं हाइलम। So this is all about the structure of ovule. Now development of female gametophyte। ओव्यूल के अंदर वन ऑफ द सेल इज गोइंग टू एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। इसके आसपास वाले सेल जो न्यूसेलस हमने पढ़ा अभी, वो न्यूसेलस वाले सेल्स में से वन ऑफ द सेल इज एक्टिंग एज अ मेगास्पोर मदर सेल, okay? This megaspore mother cell will divide and redivide to produce, it will divide by meiosis to produce 4 cells. Out of these 4, 3 will degenerate means खत्म हो जाएंगे, and 1 will be the functional. This is the functional megaspore mother cell. This functional megaspore mother cell nucleus will again divide to produce 8, 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8 nuclei. So that will form the embryo sac. 3 will go towards one side, 3 will go towards the other side. They are called the antipodals, and 2 will be in the center. एक typical plant के बारे में बात कर रहे हैं।
बायोलॉजी एक एक्सेप्शन की साइंस है, तो कुछ ना कुछ अलग भी हो सकता है किसी में। तो एग और सिनर्जिड्स और ये जो है एंटी ओडर्स, तो ये है इसकी फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट। यानी दिस फीमेल गैमीट एग will be fertilized by the male gamete produced in the pollen। तो ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो दिस इज द फीमेल gametophyte development। तो so let's study pollination। So what is pollination? Pollination is transfer of pollen from anther to stigma. Anther, the male reproductive part, and the stigma or the part of the pistil where the anther is going, pollen is going to land. So the transfer is called the pollination. So let's study what are the types of pollination. Two types of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is also called the autogamy. Transfer of anther from the same flower or genetically similar flower is called the autogamy. Genetically similar flowers, for example, if the plants are growing in a field, the transfer of pollen from that field to the stigma is also self-pollination. Okay, so we'll study what kind of self-pollination is that. Self-pollination can be in a cleistogamous flower which do not open. The flowers which do not open are called the cleistogamous flowers. So the pollen is inside the and stigma is inside, so the flowers do not open. So this kind of self-pollination is the option, there is no other option. So this kind of self-pollination is called the cleistogamy. Okay, the example is viola, oxalis and commelina. Similarly, the flowers, if they mature, homogamy, the flower at maturity, stigma and anther mature at the same time, then in this case the pollination is again self-pollination. For example, in Vinca rosea, argemone, Melovilus jalapa, potato, etc., this is homogamy. Bud pollination, sometimes the pollination occurs at the bud stage only. So if the pollination is at the bud stage, this is called the bud pollination. This is also kind of self-pollination. Now there is a kind of self-pollination which is called gitonogamy. Gitonogamy, many times 1 mark question is asked in the examination. It is a type of pollination where the pollen is from anther of a different flower of the same plant. Means, for example, I have told you, if in a field where plants are growing, the anther is pollen is coming from some other plant, then it is called gitonogamy. It is also a kind of self-pollination or autogamy. Okay, so this is gitonogamy. Now, second type is cross-poll. Before we study cross-pollination, what are the advantages of self-pollination? First advantage is the characteristics of the plant are preserved. Means if self-pollinated, there is no mixing, so those plants characteristics will be preserved. Pollination chances are more since the same flower, same field, same area, so chance of pollination is more. Then pollen are not to be produced in large number, means plant requires less pollens because it is ensured from the same plant or in the from the nearby plant. Then flowers, they need not be showy, means since pollination chances are very high, so plants need not to be very brightly colored and showy and all. Fragrance and nectars, etc., are also not needed uh, in most of the cases. Whereas the disadvantage is, if the plant is pollinating generation after self-pollinating generation after generation, there will be inbreeding depression. Means there will be some characteristics which will be these will be repeated and there will be loss of some characteristics.
This is called inbreeding depression. We'll study later. Then new characteristics are not introduced, defective characteristic may not be eliminated, or new varieties cannot be produced by these methods. So cross pollination, or nowadays hybridization, is being done to prevent this inbreeding depression. So transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another flower of a different plant is called the cross pollination. Okay, so cross pollination is also nowadays is hybridization, cross hybridization. So cross pollination advantages are, before we study the, please subscribe and share video. सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स, और आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी एक सब्सक्राइब बटन दबाने से, और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिए क्लास 12th के, ताकि उनको भी ये रेडीमेड मटेरियल फ्री में मिल जाए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दी, 25-26 वीडियोस डाल दिए हैं ऑलरेडी। तो वो सभी वीडियोस आपको एक साथ सब्सक्राइब करने से एक जगह पे मिल जाएंगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू the agencies of pollination. The different agencies we'll discuss one by one. First is wind. You know, wind, it is also called, wind pollination is called anemophily. Anemophily pollinated flowers कैसे होने चाहिए? Since they are going to be released in the air, so the pollen should be light and the stigma is very hairy to receive those pollens. So pollens are very large in numbers. The flowers can be colorless, can be odorless, or can be nectarless, because the pollen needs to be carried by the wind. Pollens are produced in large numbers, small, light, dry, can have wings sometimes. Pollens are non-sticky. Stigma is large and hairy. Here you can see sugarcane. You must have seen the maize, the hairy stigma comes out. So these are the characteristics of wind pollinated. Most of the crops, wheat, maize, rice, you must have seen the flowers are means brownish in color. They are not colored, very beautifully colored. So there is no need, since the wind pollination is there. Whereas in insect pollinated flowers, before we study insect pollinated flowers, here you will see the hydrophily, means the pollination by water. So water pollination example is a very good example is Vallisneria. Sometimes the pollen is in the form of a ribbon, so that it is caught by the uh, stigma. And here you can see the female flowers are floating on the surface of the water, and the male flowers are also they are coming on the surface, and then there is uh, fertilization at the surface of the water. So Vallisneria, the male and female flowers are floating on the surface of water. Here you can see here. So this is pollination in Vallisneria. Next is entomophily. You must have heard flowers, friends, the honeybee and the butterflies. So these are the butterflies. So entomophily, entomology is the study of insects. So entomophily is the pollination by insects. So brassica means sarson, ficus, bud, calotropis, uck, rose, acta भी कहते हैं कई इसको, bougainvillea. These are the examples where the insects pollinate the flowers. Now you can see the characteristics of the flowers. They are colored. The corolla is very brightly colored to attract the insects. Here you can see corolla is red colored, yellow colored, purple colored. So corolla is very brightly colored. Then must have nectar. Nectaries in flowers may must have, because insects are visiting them for these nectar only.
So nectar is very means there will be they are brightly colored and there will be beautiful smell also. They will produce uh, fragrance to attract these insects. So these are the characteristics of flower pollinated by insects. Next is a very important example of flower pollinated by insects is salvia. Here you can see a lever mechanism. Lever mechanism means you can see the insect proboscis entering here to the nectaries, and here the uh, pollen will be deposited on the wings of this insect, and this pollen when will visit the another flower, it will carry the pollen from here. So this is a kind of lever mechanism. Here the proboscis is here inserted, and the lever of this anther will attach to the body of the insect. So very important, very beautiful example of insect pollinated flowers. Another example is here you can see the fig. Here the insect lays eggs inside this. So when the insect lays eggs inside the fruit, the flower is closed flower, so there is no outer source for going inside. So the insect goes inside and lays eggs. When the eggs they hatch, the male wasp is going to develop, and this male wasp the male wasp will be digging hole in this tunnels बना देगा. But this male is not going to come out. It will uh, produce the tunnel for the female to come out. The female when comes out carries the pollen or the male gamete of the flower, and then it visits the next. So very important example, very beautiful example to show you insect pollination. Plants and insects have evolved together. Some flowers they resemble the insects. Here you can see the pollination by bat. Bat, the group is called Chirotera. Chiroterophily is the pollination by bats. Chirotera is the group of bats. So the flowers they should be very large, colorful, because these bats are also visiting these flowers for nectar, and the flower must have large corolla so that bats are easily they can come to the and insert their beaks in this corolla. Nectaries honi chahiye, beautiful fragrance, and since they are coming at night, तो उनको खुशबू से ही वो पहुंच जाएंगे वहां पे. तो एग्जाम्पल इज कीगेला सॉसेज ट्री, then Bohemia, then Kadam tree. Kadam आपने देखा होगा in those areas where this plant is there, must have seen bats visiting them. Next is ornithophily. Ornithology. Ornithology is the study of birds. So ornithophily is the pollination by birds. So birds again, since the birds had to insert their beaks for the nectar, the flower is very large corolla, beautiful corolla. The attraction is there. There are nectaries for the birds. So this is the characteristics of pollination by birds. Bottle brush is the example. Then agave, bignonia, bombex. These are the examples of pollination by bats. So what are the advantages of cross pollination? I deliberately brought it here before the types of pollination, because the topic in your book is outbreeding. So before outbreeding devices, so before that you must know what are the advantages of cross pollination. New varieties are produced, the offsprings are healthier, the harmful characteristics are eliminated, the offsprings are more adapted to the environment. Cross pollination ensures that the pollen is from a different
variety or different plant. So if the pollen is from a different plant, there will be new characteristics. The new characteristic, they will be resistant to diseases. Better varieties will be produced. Example we have given of onion. Whereas disadvantages, because since cross pollination requires pollen from a different plant, it may sometimes not certain. Sometimes pollination may not occur. Very good characteristics may be lost. Okay, and bad characteristics may be introduced because तुक्का है ये. Okay, so sometimes it happens. So the nature has done it to prevent self-pollination, because we have learned the disadvantages of self-pollination. So since self-pollination has so many disadvantages, so nature has some outbreeding devices to prevent inbreeding depression. Inbreeding depression we have discussed already, that if continuous self-pollination occurs, then there will be some characteristics uh, which will be lost, or which will disappear. So depression will be there. So plants have some devices for that. So for first device is pollen and stigma may not be recepted at the same time. pollen अलग टाइम पे मेच्योर हो रहा है, स्टिग्मा अलग टाइम पे मेच्योर हो रहा है, तो दोनों रिसेप्टिव ही नहीं होंगे, तो पॉलिनेशन की चांसेस आर वेरी लेस. तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन में वेरी. एंथर स्टिग्मा ऊपर है तो एंथर नीचे है, सो ये सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस आर लेस. सो दूसरे प्लांट से होगा. Self incompatibility means pollen of that particular plant is not matching with the chemistry of the stigma and pollen की chemistry ही match नहीं करती है, so self incompatible होते हैं. And unisexual flowers, तुम्हें मालूम है, some plants like papaya, the male and female plants are different. So if bisexual flowers है, तो there will be no chances of self fertilization तो है ही नहीं. So self unisexual flowers में this is the advantage, that there will be pollination from a different flower. So this is all about the pollination and outbreeding devices. So next we will discuss pollen lands on the stigma. Pollen lands on the stigma, and this will magnify the stigma at this stage and then study. This pollen is going to land on the stigma and pollen tube is going to come here. But why the pollen of this particular stigma lands on this? There is a chemistry. There are certain chemicals which are responsible, certain components are responsible, which help in landing of the pollen onto the right stigma. Or even if wrong pollen is here, that will not germinate on this stigma. Means some are compatible with this and some are इनकम्पैटिबल. कंपैटिबल का मतलब जो इसके साथ मैच करता है, और इनकम्पैटिबल का मतलब है विच आर नॉट मैचिंग विद द दिस स्टिग्मा. सो कंपैटिबिलिटी डिपेंड्स कि पॉलन कौन सा यहाँ पे आने वाला है. अगर इस स्टिग्मा को माइक्रोस्कोप के नीचे तुम देखोगे, यू कैन जर्मिनेट पॉलन्स on a slide in your class. There is a practical also. So the pollen tubes will come out in a sugar solution. You will keep the pollen. The pollen tubes will come out and you can see them on your slide. So you must see those pollens coming onto the slide. So sugar solutions help in germination of pollen. Here on this stigma ये compatible है, तभी ये pollen यहाँ पे उग पाया है. अगर ये compatible नहीं होगा, incompatible होगा, कुछ components, कुछ chemicals match नहीं करेंगे, it will not germinate on this pollen. So when this pollen is germinating on this,
स्टिग्मा, तो पॉलन ट्यूब इज कमिंग आउट। तो अगर पॉलन हमने पढ़ा था पहले कि पॉलन एक जेनरेटिव सेल होता है उसमें और एक वेजिटेटिव सेल होता है। ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है और ये जेनरेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस है। ये generative nucleus is going to divide and produce two male gametes. So let's see, these two male gametes are produced when the pollen is germinating. If the pollen is released I told you कि biology एक science of exceptions है। 3 celled stage भी हो सकती है, उस पे भी pollen release हो सकता है। अगर 2 पे है तो यहाँ पे आके वो 3 बन जाएंगे, 2 male gametes यहाँ पे बन जाएंगे। ये 2 male gametes हैं और ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं और स्पर्म न्यूक्लियाई मींस मेल गैमेट्स, तो वो भी हेल्प करता है। सो मेल गैमेट बन गए। अब ये पॉलन ट्यूब इसमें एंटर कर रही है थ्रू दी स्टाइल। ये देखिए एक पिक्चर है स्पेशली आपको दिखाने के लिए कि पॉलन जब एंटर करते हैं तो किस तरह का ये दिखता है स्टिग्मा। एक फोटोग्राफी से दिखाया गया, ये एक स्लाइड की पिक्चर दिखाई गई है। सो द पॉलन स्टिग्मा के थ्रू पॉलन ट्यूब्स बहुत सारी जा रही हैं। ओनली वन इज गोइंग टू फर्टिलाइज बट हियर द मेनी पॉलन ट्यूब्स आर गोइंग। अभी साइंटिस्ट को ये पता लग गया है कि पॉलन को स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कराने के लिए प्रोसेस क्या है। सो ये प्रोसेस है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। यू नो ये जो पॉलन्स हैं इनको ये फोर्सेप्स की हेल्प से एंथर्स को रिमूव कर लेते हैं। सो अब रिमूव करने के बाद क्या किया, इस अपनी मर्जी का एंड ये पॉलन इसके ऊपर यहाँ डस्ट कर दिया, इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर। और जो फ्लावर है उसकी बैगिंग कर देंगे। बैग मतलब इसके ऊपर एक बैग बांध देंगे, बटर पेपर का बना हुआ जनरली होता है। बैग बांध देंगे तो अब कोई और पॉलन इसके ऊपर नहीं आ सकता। रिमूविंग इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन। एंड उसके बाद बैगिंग, बैगिंग का मतलब इसके ऊपर एक बैग बांध देना। तो अब अपना डिजायर्ड पॉलन जो है, डिजायर्ड पॉलन इसके ऊपर जर्मिनेट करेगा। तो इस तरीके से अब साइंटिस्ट को पता लग गया है, तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा, अपनी मर्जी के प्लांट्स बन जाएंगे। पोटैटो और टोमेटो को मिला के पोमैटो बन जाएगा, या कई तरह की वेराइटीज बनाने में भी हेल्पफुल है। सो दिस इज artificial hybridization done by the scientists. This is the way. Okay, now fertilization. Now the pollen tube has reached the let's draw. Pollen tube has reached the ovary. This is the stigma and style. Pollen tube is germinating here and coming through this. Here there is an ovule. एक ही ovule वाला बनाएंगे। ओव्यूल जो तुम्हें मालूम है एनाट्रोपस ही बनाया मैंने। यहाँ पे भी तुम चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो, ऑर्थ्रोट्रोपस भी बना सकते हो। सो दिस इज द माइक्रोपाइल। सो द pollen tube is going to come here through this micropyle. It can come from here also, that is called chalezogamy, from mesogamy, from in between. तो ज्यादातर पॉर यहाँ से आती है, इट इज कॉल्ड दी पोरोगैमी कमिंग थ्रू दी माइक्रोपाइल। तो ये जो 2 मेल गैमेट्स लेके आ रही थी और एक वो, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अभी। ये इसमें माइक्रोपाइलर एंड पे देयर इज एन एग, 2 surrounding synergids. Here there are 2 polar nuclei and here there are 3 antipodals. ये 3 एंटीपोडल्स हैं। क्लियर। सो ये जो एग है सेंटर में, इसका न्यूक्लियस, ये एग सेल है।
पोलन न्यूक्लियाई हो या सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये यहाँ सेंटर में होगा। सो पोलन ट्यूब यहाँ से पहुंच गई दो मेल गैमीट्स लेके, दो मेल गैमीट्स, सॉरी ये मेल गैमीट्स आ गए। नाउ यहाँ पे देयर इज अ फिंगर लाइक filiform apparatus, it's called filiform apparatus. So filiform apparatus के synergids के filiform apparatus से male gametes are going to enter, तो यहाँ से enter करेंगे, ओके later on ये synergids वगैरह disappear हो जाएंगे and one of the male gamete will fertilize this egg, okay, result will be a zygote. One of the male gamete will fertilize the egg to produce the zygote, okay. So this is called fertilization, okay. Now fertilization, after fertilization what is going to happen? The synergids will disappear, zygote will be produced. Now what happens to the second male gamete? One male gamete fertilizes the egg. What happens to the second uh, gamete, male gamete? Now you know there are two in the embryo sac. There were two polar nuclei here in the center. These two are haploid, okay. So one of the male gamete will fuse with these two and result in the formation of a triploid cell. That triploid cell is called the primary endosperm nucleus. That nucleus will be produced, that is primary endosperm nucleus. So what will be the function of this? To produce the endosperm. Endosperm क्या होता है? The nutritive tissue. नारियल खाते हो ना तुम, एंडोस्पर्म होता है वो, उसका पानी भी एंडोस्पर्म है, और वो दोनों, तो वो एंडोस्पर्म कुदरत ने एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए उसके अंदर फूड का इंतजाम करके रखा हुआ है, क्लियर। तो एंडोस्पर्म उस इन दो हैप्लॉइड और एक मेल गैमीट के प्रोडक्शन से होगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन. सो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? Fusion of two polar nuclei and one male gamete, that is called triple fusion, okay. So एग्जाम में कई बार आ जाता है, how does endosperm get triploid? So आंसर आप लोगों को मालूम हो गया कि ट्रिप्लॉइड कैसे हो जाता है, और जो एग से बना है वो जाइगोट जो बन जाता है, जाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन, मेल गैमीट और एग की फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी. So syngamy is fusion of male and female gamete, and triple fusion is fusion of two polar nuclei and one of the male gamete. So this is, since दो fertilization हो रही हैं, एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की और एक उसकी, तो क्या हो गई है? डबल fertilization. So double fertilization is formation of an primary endosperm nucleus and formation of a zygote. So ये दो आपके process complete होते हैं. So this is all about today's class. So today's video was about this pre-fertilization and fertilization. Now we will study the next video we will study the post-fertilization changes in the angiospermic flowers life, angiospermic plants life. Thank you very much. Please subscribe and share video with the students of class 12. I have uploaded more than 26-7 videos, and the link to the chapter, this chapter and the previous chapter, I will give in the description box. So zygote will divide, ये अब डिवाइड करेगा और प्रोड्यूस करेगा एम्ब्रियो. सो zygote divides into, one cell of the zygote divides into two, the upper and the basal cell. The basal cell, this is the basal cell. This basal cell is going to produce a suspensor. It will produce a suspensor, you know, क्योंकि जो ओव्यूल हमने पढ़ा था, ओव्यूल के अंदर
जो टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है, वो अंदर है यहाँ पे, और एंडोस्पर्म बनने वाला है। क्लियर? सो जो एंडोस्पर्म यहाँ बनेगा, उसको ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे बनेगा, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए इससे। तो ये हॉस्टोरियम जो सेल, बेसल सेल जो सस्पेंसर या हॉस्टोरियम बनाएगा, वो इसको अंदर पुश करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक सस्पेंसर बन जाएगा। उसका जो नीचे वाला सेल है, विच इज कॉल्ड दी हॉस्टोरियम, वो थोड़ा बड़ा सेल है। बाकी के सेल्स ये डिवाइड, ये वाला सेल जो है वो डिवाइड कर करके इस तरह का एक लंबा सा सस्पेंसर बना देगा, और ऊपर की तरफ एम्ब्रियो बनेगा फ्रॉम दिस सेल, द टर्मिनल सेल। दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल सेल। सो इस टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो बनेगा। ये भी डिवाइड करेगा इनटू 2, इनटू 4 एंड देन इनटू 8, लाइक दिस। सो ये इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस से पास होता जाएगा। सो एम्ब्रियो जो है वो उसके जो स्टेजेस पास होंगी, ये है, दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज। ये गोल सा है, इट इज द कॉल्ड द ग्लोबुलर स्टेज। उसके बाद ये एक हार्ट शेप ले लेगा। सो दिस इज कॉल्ड द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये हार्ट की शेप ले ली है इसने। और बाद में ये जब मैच्योर एम्ब्रियो है, तो वो मैच्योर एम्ब्रियो इस तरीके से ये दो कॉटलिडेंस वो दिखाएगा। Mature embryo, let's see the next diagram, uh, will have two cotyledons like this, and the cells towards the hostorium or the basal cells, they will produce the radical portion, and here you will see the plumule portion. ये वाला portion जो है वो plumule यानी stem, future stem, ये cotyledons है, these are cotyledons. This is cotyledon. So ये दो cotyledons बन गए, ये plumule बन गया. This is the, here you can see the root cap. The root cap, this root cap will protect the radical. ये जो फ्यूचर में रूट बनने वाला है, उस पोर्शन को कहते हैं रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप. दिस इज शोन इन योर बुक. सो दिस विल बी द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. दिस विल बी द फ्यूचर. बाय द टाइम जो है वो एंडोस्पर्म के अंदर पुश हो चुका है. यहाँ देखो, इस डायग्राम में तुम देखोगे ग्लोबुलर स्टेज भी दिख रहा है, और तुम्हारा हार्ट शेप भी दिख रहा है. ये जो ये वाला हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो दिख रहा है, ये ग्लोबुलर शेप दिख रहा है, और ये सारा जो है वो सस्पेंसर है. सस्पेंसर में हॉस्टोरियल सेल साफ दिख रहा है, और ये एम्ब्रियो इसके अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यू जो बना हुआ है उसके अंदर ये पुश हो रहा है एम्ब्रियो, एंड देन दीज टू कॉटलिडेंस दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ये कॉटलिडेंस एंड पूरा एम्ब्रियो और सस्पेंसर, बाय द टाइम उस हॉस्टोरियम का काम खत्म हो गया, सस्पेंसर का काम, तो बाय द टाइम वो खत्म हो रहा है, और पूरा पूरा एंडोस्पर्म जो है वो इस केस में खत्म हो चुका है. एंडोस्पर्म हैज बीन यूज्ड अप, खा लिया है इसने अपनी डेवलपमेंट के लिए. तो कई सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, और कई में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है. एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक भी कह सकते हो, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस भी कह सकते हो. सो ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस. नाउ पोस्ट एम्ब्रियोनिक क्या होगा, इससे पहले कि ये करें, प्लीज सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो चैनल पे, ताकि आपको सारी वीडियोस एक साथ एक बटन दबाने पर मिल जाएंगी. आपने अपना सब्सक्राइबर बटन दबाया और मेरे चैनल को एक क्लिक किया, तो आपको सारी वीडियोस 29 वीडियोस एक ही साथ दिख जाएंगी. तो पूरा आपका सिलेबस, जेनेटिक्स पोर्शन कवर कर दिया मैंने, और ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स कवर कर दिए. तो लेट्स स्टडी.
जो सीड है वो इसके अंदर बन गया। अब ये जो सीड है, यू कैन सी कि सीड एक अनिग्मा, एक अजूबा है। कुदरत ने इस सीड के अंदर एक मिनिएचर प्लांट रखा हुआ है, मिनिएचर प्लांट बना के रखा है इस सीड के अंदर, और उसके लिए खाना भी रखा है। ये कॉटलेडेंस जो है, जो प्लूम्यूल के ऊपर कॉटलेडेंस है, वो उसके लिए खाना है। जब तक कि उसको रेडिकल या रूट्स जमीन में एस्टेब्लिश नहीं कर लेती, तब तक उसके लिए कुदरत ने खाना भी रख दिया। ओके, सो लेट्स स्टडी कि what is the structure of this seed. Now you must have heard in lower classes also कि दो तरह के seeds होते हैं, dicot और monocot seed. तो let's study the structure of a dicot seed. dicot seed में आज ही आप लोग अपने किचन में जाके देखिए, जो चने का दाना है या राजमा का दाना है, उसको आप ओपन करके ज़रूर देखिए, और आपको दिखेगा कि उसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है। अगर उसको अंकुरित कर लोगे या उसको जर्मिनेट कर लोगे, तो यू विल सी कि उसके अंदर एक छोटा सा एम्ब्रियो है। सो दिस एम्ब्रियो is going to be the future plant. Whereas हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें दो आपने इंटेग्यूमेंट्स पढ़ी थी, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनने वाली है? टेस्टा। आउटर इंटेग्यूमेंट बनने वाली है टेस्टा, सीड कोट। ये जो राजमा के दाने में आपको दिखेगी टेस्टा, और जो इसके अंदर होती है वो होती है टेगमेन। अगर आप चने का दाना देखो तो अंदर की तरफ से आपको थोड़ा व्हाइटिश दिखेगा उसका छिलका, और बाहर की तरफ से ब्राउन दिखेगा। तो जो ब्राउन वाला है वो टेस्टा है, और अंदर जो चिपका हुआ है वो टेगमेन है, और ये है कॉटलेडन है। ये दो कॉटलेडेंस इसमें दिख रहे हैं आपको, तो कॉटलेडेंस हो गए ये दो। क्लियर? अब ये एम्ब्रियो जो है, इसमें ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड दी प्लूम्यूल, एंड जो नीचे वाला पोर्शन है इट इज कॉल्ड दी रेडिकल। रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट बनेगा, और प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके स्टेम बनेगा। अब ये वाला पोर्शन जहां से ये कॉटलेडेंस इसके साथ अटैच हो गए हैं, इसके और प्लूम्यूल के बीच वाला पोर्शन इज कॉल्ड दी इपीकोटाइल। ओके, और ये इस रेडिकल और इसके बीच का अटैचमेंट ऑफ कॉटलेडेंस के बीच का पोर्शन इज कॉल्ड दी हाइपोकोटाइल. So this is the structure of a dicot seed. चने का, बीन्स का और pea, these are the examples of dicot seed. Let's study the structure of a monocot seed. Monocot seed, here you can see the structure of dicot seeds, the bean seed and gram seeds. So monocot seed has single cotyledon. Here you can see the maize seed. So in the maize seed, there is a single cotyledon which is called the scutellum. Here cotyledon is called the scutellum. And here you can see the endosperm is present. Endosperm is not used up for the development of the embryo. So such seeds are called albuminous seeds or endospermic seeds. And the seed coat you can see here, and here this is the seed and fruit wall. Okay, there is a proteinaceous layer which is called the lunon layer below the seed coat or the fruit wall. Okay, now this is the embryonal axis. This embryonal axis में the plumule portion, this plumule portion is protected by some leaves. ये तो आपको 1 डायमेंशन में दिख रहा है। अगर आप 3D में इमेजिन करो, कुछ पत्तों ने इसको कवर किया, यंग लीव्स ने आपने कवर किया। ये उसका ट्रांसफर सेक्शन काट के अंदर से दिखाया गया, तो वो कटे हुए पत्ते ऐसे ही दिखेंगे ना। सो ये दिख रहा है तुम्हें
plumule portion is protected by some leaves, young leaves, which sheaths, which are called the coleoptile, and similarly the radical portion is protected by coleorhiza. These are leafy sheaths protecting the embryonal axis. So ये है structure of monocot seed. बहुत बार एग्जाम में एग्जामिनर्स का फेवरेट है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड. तो ये एग्जाम में आता है, इसकी तैयारी आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए. So this is the structure of the seed. Now this seed, this is the diagram in your book. So I have to show the embryonal axis. I've downloaded this from the internet. So you can see the radical, root cap, and coleorhiza. Radical in all the plants is protected by a cap, root cap, because जमीन के अंदर रूट को जाना होता है और जो मिट्टी है उसके अंदर उसको पेनिट्रेट करना है, तो फ्रिक्शन वगैरह से रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कैप. उसके ऊपर एक कैप लगी होती है. ओके. अब ये सीड जो है इसके अंदर रिजर्व फूड कॉटलिडेंस बन गए हैं. और ये कैस्टर का सीड भी तुम्हारी बुक में डायग्राम दिखाया गया है. तो ये कैस्टर अरंडी को कहते हैं. ये अरंडी का सीड है डायकॉट. तो इसके अंदर ये कॉटलिडेंस दिख रहे हैं आपको. अब ये जो सीड है वो जर्मिनेट करता है. तो ये देखिए इसके इसमें ये शुरू में भी ये पिक्चर देखी थी आपने. ये जो इसके वो हैं कॉटलिडेंस, दे आर कमिंग आउट. सो ये कॉटलिडेंस आर कमिंग आउट. और रेडिकल जो है पहले ग्रो करता है, वो ज़मीन में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है. ये देखिए यहाँ पहले रेडिकल कम्स आउट. तो रेडिकल इसके अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है और उसके बाद प्लूम्यूल ऊपर आ जाता है. तो ये सीड जर्मिनेट कर रहा है. कुदरत ने ये जो फूड इसके अंदर रखा है सीड के लिए, वो इस सीड के लिए फूड रखा था. बट ह्यूमन बीइंग्स तो बड़े चालाक हैं. ह्यूमन बीइंग्स को पता लग गया कि खाना है इसमें, तो उन्होंने जो है इसको उगा के खाना शुरू कर दिया है. फ्रूट्स वगैरह जो है वो कुदरत ने अपने सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए. कल्टीवेशन में हम उसको कई गुना प्रोड्यूस कर लेते हैं और अपने लिए रख देते हैं. अब ये जो सीड है इसके अंदर जो फूड रखा हुआ है, इसलिए ये मॉइस्चर कंटेंट है इसमें. तो लेकिन सम ऑफ द सीड्स तुम अपने गोडाउन्स वगैरह में कई महीनों तक रख लेते हो. तो वो जो सीड है वो कई महीनों तक अपने गोडाउन्स में कैसे रह जाता है? उसके अंदर अगर 14-15% मॉइस्चर होगा तो वो ड्राई कंडीशन में रहेगा और वो जर्मिनेट नहीं करेगा. सो 14% मॉइस्चर में हम उसको सुखा लेते हैं. तुमने देखा होगा किसान जो है जब वो ड्राई होता है तभी उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं. सो उसकी मॉइस्चर कंटेंट को ध्यान में रख के उसको स्टोर कर सकते हैं. सो व्हेन द सीड जर्मिनेट्स व्हेन देयर इज मॉइस्चर इन द सॉइल. मॉइस्चर हम जब ज़मीन में उगाते हैं सीड को तो हम उसको पानी देते हैं, तो मॉइस्चर की वजह से वो उग जाता है. क्लियर? तो वो जो रिजर्व फूड है, जब तक कि वो अपने आप को सॉइल में एस्टेब्लिश नहीं कर लेता तब तक वो रिजर्व फूड उसका काम आता है. क्लियर? तो ये सीड, ये आपको डायग्राम जो दिख रहे हैं पिक्चर्स, ये हैं एक मोनोकॉट सीड की जर्मिनेशन की. सो यू कैन सी द एपिकल, द coleoptile or the young leaves, they are coming out and the radical is going down and producing the roots. So this was all about embryo and seed formation. Now what happened to the we had already studied कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी उसमें डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो जाइगोट बन गया था, इसका एग्स के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बन गया था. और उसके बाद दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके एक मेल गैमीट ने एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाया था. एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया था. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? ये मल्टीप्लाई कर करके
ये एक टिश्यू बनाएगा विच इज कॉल्ड द न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है वो भी अभी हमने बात की कि एम्ब्रियो के लिए खर्च हो जाता है। सो कई ऐसे हैं, 3 तरह के एंडोस्पर्म हम पढ़ेंगे, द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। सो ये जो एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा ये डिवाइड करेगा 1 के 2, 2 के 4। अब ये जो न्यूक्लियस है, अगर ये हर बार न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ये साइटोप्लाज्म भी इसके साथ डिवाइड होता जा रहा है, यानी सेल डिवाइड होता जा रहा है, तब तो उसको कहेंगे हम सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ओके। और अगर इसमें न्यूक्लियस की तो डिवीजन हो रही है, बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा। न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होती, या फर्स्ट फ्यू आर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती हैं और उसके बाद न्यूक्लियर ही रह जाता है। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्लियर? एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वेयर ये इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में, और इसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म में कुछ डिविजन्स तो साइटोप्लाज्मिक हैं और उसके बाद ये फ्री न्यूक्लियर हो जाता है। क्लियर? आर सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। तो जो भी चीज ओवरी से बनती है वो फ्रूट है। बोटेनिकली राइपन्ड ओवरी, राइपन्ड ओवरी इज अ फ्रूट। ये पंपकिन, कद्दू और ये मटर की फली, ये भी मीन सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं बायोलॉजी में, बॉटनिकली दे आर फ्रूट। So fruit is a soft pulpy part of the flowering plant which contains seeds. Fruit के अंदर सीड कुदरत ने रख दिया है और उस सीड के आसपास खूब सारा शुगरी मटेरियल रख दिया है ताकि सीड जो है वो खराब ना हो जाए, वो वायबल रहे, सीड कई उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहे, उसको कई बाहर के टेम्परेचर, ड्राई और ऐसी कंडीशन से बचा के रखने के लिए कुदरत ने उसके आसपास फ्रूट बना दिया है। ये फ्रूट जो है वो ओवरी से बनता है, ये अभी हमने पढ़ा, वो ट्रू फ्रूट है। क्लियर? बट अगर फ्रूट किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से बने, हमने पढ़ा था फ्लावर में थैलेमस होता है, ये जो नीचे पोर्शन है विच इज कॉल्ड दी थैलेमस, जिसके ऊपर पिस्टिल और बाकी के पार्ट्स ये लग जाते हैं, ये फ्लावर है। तो ये जो थैलेमस है, थैलेमस, अगर ये ही फ्रूट बन जाए तो एप्पल में क्या होता है कि ये थैलेमस ही फ्रूट बन गया है, थैलेमस ने आसपास इसको कवर कर लिया पूरा और ये फ्रूट बन गया है। और सीड और फ्रूट, ये जो बीच वाला पोर्शन जो है वो एप्पल में वो है, वो असली उसका ओवरी वाला पोर्शन मतलब सीड है। क्लियर? वो थैलेमस ने उसको पूरे को कवर कर लिया। so, ये जो फ्रूट है, इस तरह के फ्रूट्स को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सो एनीथिंग विच डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी इज अ ट्रू फ्रूट, anything any fruit which develops from the ovary is a true fruit, whereas any other part of the mm, except ovary, if it give rise to a fruit, except means ilawa, is called a false fruit। तो ये false fruit है। अब फ्रूट के बारे में तो हमने पढ़ा था, ये ऊपर वाला पोर्शन इज कॉल्ड द एपिकार्प, बीच वाला फ्लैशी पोर्शन इज कॉल्ड द मेसोकार्प और अंदर वाली लेयर इज कॉल्ड द एंडोकार्प। उसके अंदर सीड है, सीड कोट्स जो हमने पढ़े थे इंटेगुमेंट से बनती हैं। तो ये हम फ्रूट के बारे में 11th क्लास में अच्छे में डिटेल में आप पढ़ चुके हो। ये वाला फ्रूट आप देख सकते हो, ये भी एक फ्रूट का एग्जाम्पल है। और अंगूर ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है, और एप्पल तो आपने पढ़ ही लिया, एक फॉल्स फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है?
हमने पढ़ा था कार्पल। कार्पल पिस्टिल पढ़ा है तुमने। तो जो पिस्टिल है, पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल जो है वो, ये पिस्टिल जो है इसको कार्पल भी कहते हैं। क्लियर? इसको कार्पल भी कहते हैं। तो कई ओवरीज को मिलके अगर मल्टी कार्पलरी ओवरी है, ठीक है, तो मल्टी कार्पलरी ओवरी से जो फ्रूट बनेगा उस तरह के फ्रूट को क्या कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट। अ फ्रूट फ्रॉम सम कार्पल्स ड्राइव सेवरल कार्पल्स इज कॉल्ड द एग्रीगेट फ्रूट। एग्जाम्पल रास्पबेरी है, ये भी स्ट्रॉबेरी भी दिख रही है तुम्हें। और ये जो है ये एक प्लांट है जिसका नाम है कस्टर्ड एप्पल। ये शरीफा कहते हैं इसको हिंदी में। ये भी एक एग्रीगेट फ्रूट है। सो अब बहुत कम दिखता है मार्केट में, लेकिन शरीफा अगर जाके फ्रूट मर्चेंट्स के पास जाओगे तो मिल ही जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, नीचे लिखा हुआ है बटन। उससे क्या होगा कि आपको मेरी सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगी। अब तक मैंने 30 वीडियोस डाल दी हैं, ये 31st वीडियो है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी ये वीडियोस मिल जाएं एक जगह पे। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक विच इज पार्थिनोकार्पी। व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? कार्पिक वर्ड फ्रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, कार्पिक मीन्स फ्रूट्स। तो जहां भी आपने कार्पिक देखोगे ना, वो फ्रूट से जुड़ा हुआ है। तो पार्थिनोकार्पी, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन जाए उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। आजकल पार्थिनोकार्पिकली फ्रूट्स डेवलप करना साइंटिस्ट को आ गया है। आर्टिफिशियल तरीके से भी ये हो रही है। उससे क्या होगा? सीडलेस वैरायटीज आ गई हैं मार्केट में। सीडलेस वैरायटीज जो हैं उससे क्या होगा? हमारे दांतों में सीड फंस जाते हैं ना। अगर अमरूद में सीड्स ना हो तो पल्प ही पल्प हो तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा। ऐसे ही टमाटोज, बनाना, इनके अंदर से सीड्स जो हैं वो खत्म कर दिए हैं। पार्थिनोजेनेटिकली साइंटिस्ट डेवलप भी कर रहे हैं और नेचर में भी होता है पार्थिनोजेनेसिस। तो सच फ्रूट्स आर सीडलेस होते हैं, जेनेटिकली सीडलेस, पार्थिनोकार्पी। अच्छा, सीड के बारे में, छोटा सा सीड, ये बनाना के अंदर एक छोटा सा सीड हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ लार्ज ट्री। तो सीड हमने पहले भी पढ़ा था, सीड एक अनिग्मा है, एक अजूबा है। उसके अंदर एक मिनिएचर प्लांट छुपा हुआ है। तो कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनके सीड्स 10,000 साल तक भी वायल हैं। एक प्लांट का एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है लुपिनस का। 10,000 साल बाद भी उस सीड को जब उगाया गया तो वो, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, 10,000 ईयर्स के लिए वो पड़ा रहा सीड। और फिर जो वो उगा वो तो उसके अंदर से फ्लावरिंग भी होगी। फिर एक और एग्जांपल दिया हुआ हमारी बुक में, डेट पाम का। डेट पाम फिनिक्स, उसका भी सीड जो है वो कई हजार साल बाद उग गया। तो इस तरीके के सीड्स के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो कई सालों पड़े रहने के बाद भी उग सकते हैं। ये डोरमेंसी, जो सीड की डोरमेंसी है, मींस द कैपेसिटी टू for the seed to keep it for a long time without जर्मिनेशन। डोरमेंट पीरियड में पड़ा रह सकता है सीड। अब रेगिस्तान है, रेगिस्तान में सीड को मॉइस्चर नहीं मिला, फूड ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिली, तो वो डोरमेंसी में चला जाता है ताकि जब फेवरेबल बारिश होगी तब उग जाऊंगा। तो डोरमेंट पीरियड उस अनफेवरेबल कंडीशंस को पास होने के लिए इन प्लांट्स में, इन सीड्स में डेवलप किया है। हमने इसको अपने मर्जी के लिए, हमने अपने लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। हम सीड को स्टोर कर सकते हैं कई सालों तक स्टोरेज में, और हर साल उन सीड्स को फिर उगा लेते हैं। तो ये जो कुदरत ने करिश्मा अपनाया है सीड, इसी से जब आदमी नोमैड्स थे तो वो एग्रीकल्चर की शुरुआत ही इसी वजह से हुई क्योंकि सीड उग सकते थे और उससे फसल
को लोगों को खाने को मिल सकता था और वो एक साल पड़ा भी रह सकता था। अब पढ़ेंगे हम एपोमिक्सिस। व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन, ये एसेक्सुअल सीड डेवलपमेंट है। मींस अगर सीड्स बगैर फर्टिलाइजेशन के, बगैर पेन का क्या कलर है, चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये सीड्स बनेंगे तो उनको कहते हैं एपोमिक्सिस। मींस तुम्हें मालूम है कि एम्ब्रियो सैक था, है ना? उस एम्ब्रियो सैक में एक एग था और एग के आसपास सिनर्जिड्स थे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडस। तो ये जो एग है इसको मेल गैमीट फर्टिलाइज करके बना देता है जायगोट। एग तो हैप्लॉइड था, ओके, उसके साथ मेल गैमीट फर्टिलाइज करके जायगोट बन जाता था और जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता था और जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता था वो प्लांट बना लेता है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये इस जायगोट से मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से ये जो प्लांट बना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। बट अगर ये डिप्लॉयड जो सेल है, जो मेगास्पोर मदर सेल था, अगर वो डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहे और उससे जो बनेगा वो डिप्लॉयड ही जो एग है उससे जो प्लांट बनेगा वो एपोमिक्ट है। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड बन गया उसको कहेंगे एपोमिक्ट। अब इस केस में तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही रहा। क्लियर? और ये इंड्यूस भी की जा सकती है, एपोमिक्सिस भी इंड्यूस कर रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे मियोसिस हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। एपोमिक्सिस का मतलब ही यही है। एपो का मतलब विदाउट, सॉरी, विदाउट, और मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट की मिक्सिंग के बगैर, मिक्सिंग के बगैर ही, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ये प्रोसेस हो गया। क्लियर? सो विदाउट मिक्सिंग ये हुआ। सो एपोमिक्ट प्लांट्स क्या एडवांटेज हो गई? एपोमिक्सिस में एडवांटेज ये हो गई कि जो प्लांट है वो उस पेरेंट प्लांट के जैसा ही होगा, क्लोनल होगी एक तरह की। ठीक है ना? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही हो गई ये क्लोनल रिप्रोडक्शन। तो ये देखो, ये प्लांट है, इसने नया प्लांट बना दिया, इसके एक ब्रांच सी निकलती है और उसमें से नया प्लांट बन जाता है। तो एपोमिक्सिस में एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट बन जाते हैं। और ये एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। एडवांटेजेस इसके लिए है कि एक बेचारे साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन से कोई वैरायटी प्रोड्यूस की, उस हाइब्रिड वैरायटी की कॉपीज बनानी है, तो एपोमिक्सिस इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, तो वो प्लांट हाइब्रिड की नई जो एपोमिक्ट होगा वो उसका क्लोन होगा और उसको बार बार सीड्स बदलने नहीं पड़ेंगे। और अगर वो हाइब्रिड जो प्लांट साइंटिस्ट ने बनाया, अगर उसके सीड्स अगली बार मियोसिस कर गए तो वैरायटी बदल जाएगी। तो वो हाइब्रिड वैरायटी को अगर एपोमिक्सिस से डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि वो जो है वो उसके क्लोन्स ही बनते जाएंगे, किसानों को बिल्कुल उस हाइब्रिड वैरायटी जैसे ही मिलेंगे। तो एपोमिक्सिस अगर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाए हाइब्रिड वैरायटीज में तो बहुत साइंटिस्ट के लिए, किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं तो हर बार नए सीड्स खरीदने मार्केट जाएंगे। एक लास्ट टॉपिक रह गया, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? अ, अगर एक एग से एक से ज्यादा एम्ब्रियोज डेवलप हो जाएंगे, इस फिगर में तुम्हें दिख रहा है एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, पॉली एम्ब्रियोनी नाम से ही पता लग रहा है। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैसे बन सकते हैं? तुम्हें मालूम है कि वो जायगोट बन गया था, अब ये जायगोट में डिवीजन हो गई, जायगोट में एक के 2 सेल्स बन गए, तो ये भी 2 एम्ब्रियोज बना देगा। और प्लांट्स में तो न्यूसेलस
टिश्यू। यानी प्लांट्स में तो हमने पढ़ा था टोटीपोटेंसी है। टोटीपोटेंसी का मतलब है द एबिलिटी ऑफ एवरी प्लांट सेल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, सॉरी, टोटीपोटेंसी पोटेंशियल है प्लांट में टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो वो साइंटिस्ट जनरली टिप से लेते हैं क्योंकि वो डिजीज फ्री सेल्स होते हैं, तो टिप पे सेल्स ले लिए और उनको कल्चर मीडियम में ग्रो कर लिया। तो वो तो हर प्लांट सेल से नया सेल प्लांट बनाने लगे हुए हैं, लेकिन कुदरत में भी ये है। सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी है। सिट्रस के सीड को अगर खोल के देखोगे तो उसके अंदर कई एम्ब्रियोज दिखेंगे तुम्हें। तो ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है इस पिक्चर में भी दिख रही है, ये न्यूसेलस टिश्यू से भी बन सकते हैं एम्ब्रियो, और जायगोट में डिवीजन से भी बन सकते हैं, और कई तरीके से प्लांट्स में पॉली एम्ब्रियोनी हो सकती है। तो उसका एडवांटेज यही है कि एक एक सीड से कई कई प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। एंड फिर से सब्सक्राइब करो, बटन नीचे जाके दबाओ ताकि वो वीडियो के नीचे दिया होता है सब्सक्राइब, और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन भी होता है ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आप लोगों को पता लग जाएगा। और दूसरा, सब्सक्राइब करने से सारी वीडियोस एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।